Hello guys, am I audible? Can someone just confirm me? Am I audible over the chat? Okay. Hello guys. So we are starting off with our first campaign of Android Study Jam, which is known as Compose Camp. So it's a month-long event which has already started from 8th of September till 8th of October. We'll be having around 4 to 5 sessions where we'll be teaching you guys about Kotlin, which is used for making Android apps. So we have our facilitator Sandesh Verma. He's the data science lead of GDSC-DTC. So he will be teaching you guys about the procedure and how to learn Kotlin. And I would like to hand over to Sandesh Verma for more briefings. Sandesh, over to you. Yeah, thanks. Thanks, Aman. Am I audible? Just play in the chat. Yeah, I want to see many people. There are 25 people right now. Yeah, yeah, sure, I'm audible right now. Yeah, thanks. Yeah, sure. So, hello guys. My name is Sandesh Verma, and I am the data science head and of GDSC-DTC. And currently, I'm handling the Android Jam and the Compose Camp for the GDSC-DTC this year. So, how are you guys all? I want to see in the chat, like how the Josh, how many of are ready to go for camp, ready to go for a compose camp? Yeah, I said ready, fine. Yeah, yeah, so nice. Yeah, sure. Yeah, great. Okay, so let's get started. So this is our compose camp for 2022, and we will be in the today's session. We will be creating our first Android app by using Kotlin, and I will be teaching you some basic Kotlin, right? So next slide, next to next. Yeah. So इस सेशन में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं. So first is Android Studio, second Jetpack Compose, and third is Kotlin Basics. So हम इन तीनों का यूज करके we'll build our own working Android app from scratch, and you can also deploy it on a Play Store. Next. So let's start with the unit one. So there will be like 5 unit or 4 units you will be completed in this compose camp. So let's start with the unit one. I will be explaining the whole unit one and the basics of it. So let's start the first Android application. Next. Okay. So let's start with downloading the Android Studio. How many of people you know about Android Studio or just worked with Android Studio in the past? In the chat if you can. Yes, me. Oh, there are many people. Like 2 cities. Nice. Nice. So that's a great thing. मतलब मुझे लगता नहीं था कि किसने एंड्रॉइड स्टूडियो अभी तक डाउनलोड भी किया होगा. So for those जिन्होंने नहीं किया था, so let's download Android Studio. So Aman, can you drop the link for the Android Studio in the chat? Nice, there are many people. Great. Aman, can you drop the link? Yeah. So you can go to the chat link and just download Android Studio for Windows. It will be working perfectly, not perfectly, like 8 GB RAM and a decent processor. So next slide. Okay. So let's start with the session by learning what is Kotlin. So Kotlin is the language of application development. So अगर मैं पूछूं application development किस में, like Android है, iOS है, ऐसे बहुत सारे platforms हैं. So Kotlin is only based on Android development. So why developers mostly use Kotlin? Because it is concise and we have to write fewer lines of code to get the UI and the functionality. So essentially
Kotlin make Android apps really better. Like the load times is really short, and it is really robust, and it crashes very low. So starting with why Kotlin is gaining so much momentum in 2022 or in the recent years. So Kotlin is widely and famous among the majority of the application Android developers. So that's why it's gaining momentum in our industry. And I know you guys also will be learning this language, right? So next. So let's get started with Kotlin, right? So how many of you want to code in Kotlin? Like सबने एक language तो कर रखी होगी, like Python and all. So लेकिन सब चाहते हैं एक और language करें. So we're learning the basics of Kotlin. So how many of you are ready? So Arman, if you can drop the interactive code editor in the chat. So I want all people, like there are 24 right now. So I want all of you to just go to that link and just code along with me. So अच्छे समझ में आएगा. So what is Kotlin Playground? So ये बस एक इंटरैक्टिव कोड एडिटर है जिसपे आप अपना Kotlin का कोड लिखोगे और उसको आउटपुट में देखोगे. यहाँ पर कोई ऐप नहीं बनेगा आपका, राइट? सो अगर सब उस पे प्लेग्राउंड पे आ गए तो एक बार थम्स अप कर दो, आराम से चलेंगे. Even thumbs up if they're in the Kotlin playground. They should see a Hello World program there. Yeah, yeah, nice, nice. Yes, we can see. Okay, great, great. So next slide. Okay, so जैसे हर एक लैंग्वेज में होता है, स्टेपिंग स्टोन इज ऑलवेज द हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड से हम हमेशा अपनी एक लैंग्वेज की स्टार्टिंग करते हैं, तो व्हाई नॉट कॉटलिन? So let's start writing hello world in Kotlin, right? So let's start. Okay. So Mehfooz, if you can close the screen share, I want to. Yeah. Okay. I guess everyone can see my Kotlin playground, right? Yeah. Okay. So everyone would be seeing this, the playground with JVM on and Kotlin, everything. So there is a predefined code जो यहाँ पर लिखा हुआ है, which is hello world, and तुम रन भी करोगे तुम्हें hello world दिखेगा. So ये आ कैसे रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी हो कैसे रही है, और ये कंपाइलर इसे पढ़ कैसे रहा है. So let's see that, right? So function, अगर हम दूसरे लैंग्वेज से आ रहे हैं तो हमें पता होगा फंक्शन, इट्स लाइक हम रीयूजेबिलिटी हमारी आसान हो जाती है. फंक्शन इज अ ग्रेट वे, राइट? तो फंक्शन इसमें भी है. So how we use function in it? So we use a fun keyword with the function name after it. So right now it's main. So in Kotlin, the main function is the starting point of the execution of the Kotlin program. So we are at the starting point of the the code execution. And println hello world is the body of that function, right? So you will ask now. So we'll ask, what is println? Like println hai kya? Like it's written like println, but what's the full form? So full form is print line. So it's doing nothing. It's just printing a line given in the parentheses between it, which is hello world. So it's a simple program of hello world which is printing a line, right? So yeah, Mahfouz. Yeah, Anshubura, yeah, you're correct. It's a new line. Yeah, forward. So see, it's written. उसमें भी ये सब यही लिखा है कि it's a starting point of a Kotlin program. So basically, fun, main, println, hello world, right? Next week. Yeah. So वही println उन्होंने define कर दिया कि वो कैसे चलता है and what is the function of it. Okay. So coming towards the variables. So how many of you know variables? Everyone is of I guess a CSE branch, so variables तो पता ही होगा, right? Variables, right?
Only one person know. Okay, enough two. Great, great, great. Okay, okay. Mostly all know. Oh no, all know, man. All know. Oh damn, all know. Okay, so मुझे इतनी मेहनत नहीं लगने वाली, but still, what is variables and how do we create it, and how do we use it, variables in Kotlin? So broadly, दो टाइप के variables होते हैं Kotlin में, val and var. So val कीवर्ड क्या करता है? val कीवर्ड भी हमारा कांस्टेंट और एक वेरिएबल बनाने के लिए यूज होता है, but the value it stores cannot be changed. We cannot change the value upon the program execution, but as in var में हम वही variables and constant बनाते हैं, but we can change the value upon the progress of the code execution. Like I want to show an example actually. Matthews, if you can. No, close screen. Yeah, I want to just see the example. Example से सही समझ में आएगा. So yeah, okay. So we talked about variables right now, right? So first मैंने बताया कि val कीवर्ड मैंने बताया कांस्टेंट्स और एक वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल के यूज होता है, जो जिसकी वैल्यू हम चेंज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के साथ नहीं कर सकते. So if I am writing a name, let's say my name is Sandesh, right? And I want to change the name. So usually हम जब change करते हैं, we declare the value again. So I want to Anshul, right? I want chat. I saw Anshul. So let's say Anshul. I want to change my name to Anshul, right? So let's see what error this throws. It says val cannot be reassigned. Why it's showing? Because val cannot change the value upon the program execution, and it's correct. It's showing the val cannot be reassigned. So that just it prove वो prove कर देता है point कि it cannot be done. So val is only used for constant, और अगर हमें ऐसी value store करनी है, it cannot be changed, right? Now let's see about var, how var is used. Right, so let's see var, and if it is a price of some, let's say a fruit, right? So right now आम 100 का, ठीक है, but after some time the price changes to, let's say, 50 rupees. बहुत सस्ता हो गया, right? So अब क्या होगा अगर कोई बताना चाहे? अब क्या होगा अगर मैं इसको रन करूंगा? तो प्राइस मेरा 50 हो जाएगा या 100 ही रहेगा? 100 प्राइस चेंज होगा, और कोई प्राइस को 50 असाइन हो जाएगा. 50, ओके, यस, चेंज होगा. ओके ओके, चेंज हो जाएगा. सो जिसने भी चेंज हो जाएगा या फिर 50 बोला, दे आर करेक्ट. और कोई बात नहीं जिसने 100 भी बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बताएंगे क्यों हुआ. सो रन किया. वेट, लेट मी प्रिंट इट टू. जब तक प्रिंट ही नहीं करूंगा तो दिखेगा कैसे प्राइस? सो लेट मी जस्ट प्रिंट द प्राइस. So it's showing me 50. How it changed? So as I told earlier, var एक ऐसा keyword है, if we store any value to it, it will change. Like if we can change that value if we want. So अब मेरे पास 100 था, but I changed to 50, और मैंने print किया, मेरा 50 आया. लेकिन अगर मैं val में ऐसा करता, like मैं अगर मैं इधर val में, if I put the name as, let's say, 10, but I cannot change it because मेरा change नहीं हो सकता. But that's the difference between these two keywords. So ये mind में रखना जरूरी है कि val और var हमें कब कब यूज करना है, और दोनों के अलग अलग significance है, right? So yeah, महफूज, किसको यहाँ तक तो आ गया होगा समझ कि वेरिएबल्स क्या है और ये दो वेरिएबल्स का क्या सीन है, राइट? या नाइस नाइस, काफी एक्टिव लोग, नाइस, दैट्स ग्रेट. या सो लेट्स सी, अब हमने वेरिएबल तो स्टोर कर दिया, लेकिन हम उसको डेटा कैसे बताएंगे? लाइक उसमें कौन सा डेटा टाइप था? अगर हम डेटा टाइप की एक नॉर्मल डेफिनेशन भी देखें, व्हाट इज डेटा टाइप?
Data type is nothing but the type of data we are storing in that variable, right? So अभी मैंने जैसे सबको दिखाया था, name equals to संदेश था, so what it was, string. तो अब हम देखेंगे कैसे कैसे डेटा टाइप्स हैं, like there are right now 5, this is a primitive data types. So starting with string, हमने string देखा, it was text like for the example for the literal values it's add, contact, search, sign in, double quotes के अंदर. तो जैसा मैंने उधर बताया था, name संदेश, तो that was a string. int क्या है? int is nothing but a whole integer number. जैसे अब example, for example like 32, 12, random number and it can be negative too. तो ऐसा नहीं है कि negative के लिए कोई और data type use होगा. We can use int only. For double, double is basically a decimal number. An example like 2.0, 50 point something and something and can be negative too. And for the float, float is the same as the decimal number, but what is the difference between the two? Float is used when we have to show a less precise value, right? So it's only used when we have to say like very less when we are like guessing something in decimal, so it used there. So when we use float, we have to mention like a small f or capital F at the end of the float number, right? And next is the bool. So like when we compare something, if I want to compare 1 is less than 3, obviously 1 is less than 3, so अगर हम उसमें boolean डालेंगे it will show us true. So boolean is only the two possible values if they're like head and tails, so it shows us a true or false. It's just the simple thing. Next, okay, so data types अगर सबको समझ में आ गए होंगे, let's move on to variable declaration. So what is variable declaration and how we declare it and obviously use it. So महफूज अगर तुम क्लोज कर दोगे. Yeah, let me just examples are better. Okay, so variable declare. अब जैसे मुझे इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई भी अगर कोई चैट में बताओ कोई सा भी वेरिएबल है, कोई सा भी एग्जांपल इफ दे वांट टू सी एनी एग्जांपल वैल, और उसके हमें देखने के लिए कि हमें वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखने को इंट है वो इंट मैक्स. नाइस नाइस. सो जैसा अभी जय ने बोला ही वांट्स टू सी कि मैक्सिमम नंबर वाला, सो हमें मैक्सिमम नंबर बताना है. सो ऑब्वियसली कोई नंबर है तो वेरिएबल वैल्यू होगी लाइक कि वो कभी भी चेंज हो सकती है. सो लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स वी विल यूज दैट. सो हमने वैर यूज किया एंड एज ही सेड मैक्स, तो हमें मैक्स वैल्यू एंड ऑब्वियसली इट्स अ इंट. सो नाउ we have to declare the data type. So now we coming towards the variable declaration. So हमें अब variable declare करना है. So var max, it's an int. So how we'll declare it? So इसका syntax होता है, we'll use semicolon, right? Then we write the data type, and data type is int. So this is the basically the syntax, right? So अब हमने declare कर दिया int, right? हमने declare कर दिया, अब हमें इसकी कोई initial value रखनी है. So max की कोई अब समझ लो 25. So this is the maximum value and it's int, right? So I'll print ln, I'll see the max value as 25. Yeah. So अब तुम पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे कि मैंने डेटा टाइप मेंशन क्यों किया, लाइक पहले मैंने इधर नेम लिख के विदाउट मैंने करा था तो तब भी आ रहा था आंसर, तो आएगा आंसर आएगा, ऐसा नहीं है. तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर बेसिकली अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस, but sometimes we have to mention data type because if we are making like big software we have to mention data types or what type of data it's coming from the user. So it's a good practice, like a code practice, to write the data type or the type of data the variable is storing, right? So I guess variables declaration यहाँ हो गई है महफूज. Yeah, it's doing a lot of work. Yeah. So this slide only this way. So जैसा मैंने बताया, val, he used val because he is a count, so don't want to change, but we wanted to change, so we use val, right? So
val count, the name of the variable, then semicolon and the data type. Then he assigned the value with the assignment operator and he initialized the value. Right. So it's the same thing. Next. Okay. So let's we come to the string interpolation. Like interpolation, आदि तो मतलब समझ भी नहीं आता interpolation है क्या, तो इसको एकदम break down करते हैं. Right. So what is interpolation? Interpolation is nothing but कि जो वेरिएबल आ रहा होता है हमें उसमें नीचे उसको कहीं रीड करवाना है. Interpolation is just that thing. Right. So if we interpolate, like see this example, it's saying like val unread count equals to 5, val read count equals to 100, and then it's printing like you have dollar and this a curly brace. अब बोलो dollar curly brace है. First of all, the dollar I क्यों रहा है? Right. So dollar is the syntax for the interpolation. Right. So dollar curly brace is usually used for the string interpolation, and whatever written inside the curly braces is like variables we declared earlier. So right, unread count plus read count. So अब वो unread count ऊपर देखेगा compiler. If it is like it's 5, so 5 plus read count is 100. So what will the answer? 105. और कुछ वो बोलेंगे कि हम एक नया वेरिएबल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक लाइन को बचाया, लाइक उन्होंने एक मेमोरी बचाई. So it's a great thing. अगर interpolation we can use every time if we write code. Right. Next. Right. Okay. So so how many of you, मैं जानना चाहता हूँ, लाइक मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है इधर कि हाउ मेनी ऑफ यू कमेंट योर कोड. लाइक कोई भी कोड बनाते हो तुम या तुमने कुछ छोटे मोटे भी कोड करते हो, हाउ मेनी ऑफ यू कमेंट, लाइक कमेंट लिखते हो. Okay, okay, okay. Many people. So you guys are really good. Like you are OG because commenting is really important. Like it's a coding practice that everyone should follow. Like everyone. अब समझ लो अगर मुझे सत्यम या रिया इसका मुझे कोड चाहिए, राइट, अगर इन्होंने कमेंट ना किया होता तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे हैं. लाइक अगर वो इंटरपोलेशन ही मैं बता रहा होता, लाइक रिया ने कमेंट नहीं कर रखा, लाइक उसने इंटरपोलेशन के बारे में मुझे नहीं बता रखा, सो मैं उसके कोड में बता भी नहीं पाऊंगा कि वो कर क्या रही है. मैं फिर डिसअपॉइंट होकर उसका कोड ही यूज नहीं करूंगा, राइट. बट कमेंटिंग से वो क्या हो जाता है, कमेंटिंग से इट इज इजियर टू रीड द कोड. अगर सत्यम मुझे बता देगा अच्छा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज दिस, सो आई कैन यूज इट इन माय कोड टू. So basically, you are learning and teaching someone else too. So commenting is this much important. So how we comment in Kotlin? So we use double slashes to comment as a single line. So single line comment is basically used for like one liners, like one line code जो होते हैं. Like अगर समझ लो मुझे function के बारे में बताना, so I use a single line comment. But and second is a multi-line comment. It starts with a slash, then a star, and end with a star and a slash. सो अगर मैं मल्टी लाइन कहाँ यूज करूंगा, इफ आई वांट टू टेल कि अच्छा ये वाला फंक्शन है पर लॉन्ग कमेंट है काफी ज्यादा मेरा, कि इफ आई राइट टू लाइक 2-3 लाइंस का मेरे पास कमेंट है कि अच्छा ये फंक्शन ये करता है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड डीबग इट, सो मैं मल्टी लाइन कोड यूज करूंगा. सो यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया, लाइक हमने अभी तक डेटा टाइप्स पढ़ लिए, हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ लिया, हमने कमेंटिंग भी सीख ली. यहाँ तक कब कितनों कितनों को समझ में आ गया? ओके ओके, I'm getting 2 responses. Okay, okay, okay. So Arman, how about a quiz? Like it's really a short quiz. Okay, Arman, how about a quiz? Yeah. We can proceed. It will be much fun learning. I guess the folks are quite like. Yeah. So let's start with a quiz. Okay, so we'll be sharing a link for a quiz, or I just present. Mehfooz, can you close the present? Yeah. So I'll be presenting a QR code or a code. Just go to slido.co. If you can see my screen, and just go to this link and tell me if you are at the quiz point. We don't know, it has some swags in it. What Aman? Is it a इसमें swags होंगे क्या? Maybe. Maybe, maybe.
It can. Yeah, code. Let me we, just put on the code. we have a month long Yeah, it's a month session. long. So क्या पता कोई लीडर बोर्ड जैसी चीज हो. Like we can't guess. Right? You can't guess. कुछ भी हो सकता है. क्या पता हम इस कोड के रिजल्ट से like further सेशन में क्विज होंगे. उससे किसी बंदे को स्वैग्स मिले. Like it will come from directly from Google. So if when सब join कर लो एक बार मुझे बता दो. If everybody join. Just making interactive. Okay. Okay, Anuj joined. I want to see like 25 or 24 more people. Okay. Arman, when काफी बंदे join कर ले, can you start it? Yeah, sure, sure. I'm just starting it in 2 minutes. Okay. Like many joined. So how many? Like 3 or 4 people joined. Only 3 or 4 people. Yeah, Pratham. I'm seeing people now. Mahfouz, Jay, Satyam, Avejit, Hitesh, Pratham. Okay, okay. More. Who don't want swags, man? Join fast. Exactly, Sandesh. I'm planning to even participate. Bro, Should I? I'm even participating from my phone, man. Okay, let's go to my phone, man. I want to also participate. Only I also 50% want of the the swag. I attendees. also want the swag, man. I also want the swag. Yeah, exactly, exactly. Oh man, too many contenders. Too many, man. Okay, so there's like 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh man, 12, 13 people. Should we start, Aman? If you Oh, we can. should wait for 1 more minute. Like Okay, there are okay. still Sure. eight, nine Yeah, people who haven't joined. If you guys facing any problem, then yeah. just write down Okay, on chat. sorry. Chat में बता दो if we can fix it. If it's a Slido regarding issue. इवन संदेश तुम्हें पता है ये जो लीडर बोर्ड्स होती है ये गूगल की जो कम्युनिटी मैनेजर है उनके पास जाती है सो Yeah, it goes. Usually, पिछले वाला जो इवेंट हुआ था वो गया भी था and we हाँ some actually got mails. You have to go poll section and write our name. Yeah. So I can see many people. I want to also join live. I guess. Did you live the poll? not yet Okay, just a okay. minute we are starting off at 4:37 right Okay, I'm announcing. Okay, I'm announcing something. So there will be a leaderboard of this quiz. Like quiz will be harder as we go on to a further sessions. And who will be the top person? Will keep a record of every person. We will get a swag and a shout out from our social media. What about it, Aman? yeah good going Yeah. Yes. Many people joining. The many. There are 20 people right now. Should we okay start? so yeah I'm starting off Sandesh Yes. Okay. So the first question: who is the creator of Kotlin? Okay, that's a spicy question. So JetBrains, Google, Microsoft, and IBM. Who is it? Let's see who's just the 3 more fastest finger seconds first. Who's the fastest finger? Oh, 15 answered. 16 answered. Okay, JetBrains, 50% people. JetBrains, nice. Okay, the result will be out soon. Nice. 44 goes Google. Okay, Sakshi, 10 sec. It's 10 seconds, right? Okay, it's 10 seconds. Sorry, my maths is bad. Sakshi won the first spot in the first question. Okay, second question. When was Kotlin introduced? Oh, मैं भूल जाता भाई. मुझे नहीं पता होता इतना dates. Sorry. Let's see who will win.
see. Okay, many goes with 2016. Oh damn, 43% people knew. You're better than me. Okay, Sakshi banged this spot again. Okay, Sakshi is on a roll. Which open source license is Kotlin released under? So it's GNU, it's MIT license, or Apache, or none of the above. It's a great question, actually. It's a really great question. See. Okay. Okay. Oh my god. Like 29, 29, 29. Apache. Yeah, that's the correct answer. It's released under the Apache. Okay, Sakshi finally came down to 3 and the Cody is on the first spot. No one answered the correct. Okay, Sandesh, I guess the next will be the last question. Yeah, yeah, yeah. Yeah, no worry, no worry. Okay, so this will Guys, bring into this session right now. Let's see. just put your brains off. Yeah, It's a simple question. really. Let's see who attended the session more clearly, like half of the session more clearly. Okay. Who's the 6%? No worry, no worry. Okay, let's see the last leaderboard. Sakshi, damn clap, man. Congratulations, Sakshi. Congrats. Sandesh, just keep the track of the Yeah, leaderboard. yeah, I'm keeping the track, man. Obviously, she's gonna get something after the whole session. Whole the 30 months of compose camp. It's a camping, right? Yeah, Really. exactly. I guess, guys, you enjoyed the quiz session, and again, I How many would like to hand included over. the quiz? Like Sakshi banged the spot, man. Nobody gave her a good fight. Like many, like Rocky by Satyam, Dia M. Guys, जीतना है ना तुम्हें. Congo, Sakshi Congo. Okay. Shall we resume? Aman? Yeah, Sandesh, you can resume. Yeah. Please carry. Yeah, Mehfooz, if you can. Okay. Okay, so we read about commenting and all. So let's move on to the functions. Okay, so हर लैंग्वेज में जो खतरनाक चीज होती है functions. Let's get on with it. Right. So what are functions तो हम पहले देख चुके हैं. Like fun है, like fun से हम उसको keyword से start करते हैं, then we name it and it has a body inside it. Like we know it from the recent hello world, right? So next page. So उतना हमें पता है. So like अब हमें खुद भी बनाने आने चाहिए ना. Like अगर हम कोड बना रहे हैं तो हमें खुद एक अपना खुद का एक फंक्शन बनाए और फिर उसे कॉल भी करें, right? So let's make a function. Memphis, can you stop sharing? Yeah. Guys, अपने प्लेग्राउंड में आ जाओ दोबारा. कोई आता रहेगा पर प्लेग्राउंड में आ जाओ सब. And let's see the screen. Okay. So ये मेरा मेन फंक्शन है, but I want to create a one more function जो मेरा होगा. So function मेरा, ये मेरा फंक्शन है. Easy, funny name और मजा भी आता है सुनकर. Right, ये मेरा फंक्शन है. सो मेरे फंक्शन में मैं क्या डालना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ मेरे फंक्शन में जो अभी क्विज जीती है साक्षी, मैं साक्षी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. सो एक्चुअली आई शुड राइट कॉन्ग्रेचुलेशंस साक्षी, राइट. सो अभी मैंने फंक्शन बना तो दिया, लेकिन अब मुझे इसको प्रिंट भी कराना है. और अगर किसी को रिकॉल हो, आई सेड कि फंक्शन मेन इज द एंट्री कोड ओवर एग्जीक्यूशन इन कॉटलिन, राइट. तो अगर हम उतना भी ध्यान रखें तो इसका मतलब हमें फंक्शन मेन में अपना मेरा कॉल करना पड़ेगा, राइट. तो हम मेरा कॉल करेंगे. कैसे कॉल करते हैं? जस्ट राइट मेरा और द फंक्शन नेम विद द parentheses, राइट. Let's see if it prints. If it is error,
Okay, it's printing. It's printing on the first try. Great. So it's coming. Congratulations, Sakshi. So what we see in this, we actually saw कि हम अपना function कैसे बना रहे हैं, how we are defining our own function and how we are also calling it in the main function, because main is the execution, the starter execution of the Kotlin program, right? Okay, महफूज. Okay. So we हमने सब पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं. Okay, so function with a return value. Okay, थोड़ा खतरनाक है. Okay, so return value. So अब अभी जितने भी अभी हमने एक फंक्शन बनाया था मेरा, उसका कोई रिटर्न नहीं था, लाइक इट वाज नथिंग, इट वाज रिटर्निंग नथिंग, लाइक वो ना कोई इंट दे रहा था ना कोई स्ट्रिंग दे रहा था, इट वाज अ सिंपल फंक्शन with the print line. So how we create a function which will return something, right? So it is a syntax. So let's see the syntax. It's a fun keyword again, name of the function, parentheses, and this is the new thing. We are specifying the return type. So when we return something of a function, we have to specify the return type. Return type is basically mean the return data type. So what type of data we are returning. So semicolon and type the data. So let's see if I am returning an int, right? So I'll write int, right? Simple. I'll write int. I'm returning an int data type. Then the function body, what I want to do in the function, and the return statement. Right. Can you go to the next? Yeah. Oh, actually come back. Actually come back. I want to just stop share. I want to show the return statement because it's sometimes it's, yeah. I know I'm just going again and again to Kotlin creator. Sorry. Okay. So अब मेरा function था ये. I want to return string because println मुझे string कर रहा है, तो मुझे string देना है. अब मुझे return करना है, right? अब return string तो मैंने बता दिया, लेकिन मुझे कुछ बनाना भी तो पड़ेगा, right? तो मैं एक var बनाऊंगा because मैं string उसको return करा रहा हूँ. I'll return a string. So var name which will be equals to my name. Okay. So then I will return using the return keyword. So जो दो चीजें थी, we use the data types and now we are return statement. Return statement में I will return name. अब तुमने return कर दिया, but उधर function call में वो जाएगा कैसे? Function call में जाने के लिए we have to make a variable here too. So like make answer and just main इसमें कॉल कर दो. अब बोलोगे मैंने स्टोर क्यों किया? अब रिटर्न ने नेम, रिटर्न ने अपना जो व्हाट इज सेइंग, रिटर्न ने अपनी वैल्यू तो हम दूसरे फंक्शन में भेजी, बट वी हैव टू स्टोर इट समवेयर इन द मेन. सो वी स्टोर्ड इन द आंसर, राइट? So let's just enter and we have to print answer. It should print. Okay, so there is coming exception in thread main Java. Okay, there's some error. Okay, I'm doing it. Okay, even I do, just errors. So, man, I'm doing errors. Okay, bad names English. Okay, so any person who can correct me, मेरा call करेंगे ना main function में. Yeah, answer equals to मेरा. Yeah, that's what I'm doing. That's what I'm doing, man. Any other? I'm using answer. Right. I'm then calling Mira. Yeah. So what I'm doing wrong? I'm doing the correct thing, right? I'm returning the name. I'm mentioning this answer, but still, why it is not coming? Can anybody tell in the chat? Okay. Let's see. Let's try to debug it in our own. Okay. So हमने मेरा कॉल तो कर दिया, इधर वो नेम वो कर भी रहा रिटर्न, राइट? So what should we do?
So we can actually print answer, and let's see again if it's okay. It works. I guess for some compiler problem. So it works. So see what we did. We return the name, and the name goes to the answer and is stored in the answer. So when we return a value, just keep in mind we have to, just contain it in some other variable from where we are calling it. So हमने उसे आंसर में उसे स्टोर किया, then we printed it, right, and it shows my name. So we can do it with more function and more things, right? Oh, somebody, हाँ अब हो जाएगा. लास्ट टाइम मैंने लिखा था मेरी. ओके ओके. Oh, it was my mistake. Okay, nice. Okay, okay. So Mehfooz, nice, nice. Satyam, सही है. No, 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 no. Satyam. The thing is, yeah, I want to correct Satyam first. So where answer equals to mera, then dot dot string. We cannot declare the answer. Like if I'm coming to that, if we want to declare the where, we have to like string. So we have to use the string thing before that, like where answer semicolon string equals to mera. If you want to declare the data type what it's storing, but it's वो अभी हमें जरूरत नहीं है. कंपाइलर उतना समझ जाता है, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं. कंपाइलर समझ जाता है एक्चुअली. ओके, या ग्रेट ग्रेट. ओके, सो लेट्स कम टू द void फंक्शन. तो void का मतलब क्या होता है, कोई बताओ. इंटरैक्टिव. void का मतलब क्या होता है? नल. नाइस. और कोई? नल. एम्प्टी. या ये अच्छा था. एम्प्टी. नल नल. ओके. रिटर्न नथिंग. या ये भी अच्छा था. Okay, so actually Satyam is on point, but everyone said this like great thing. सबको पता है. So void मतलब पता है. So अगर void पता है तो ये तो आराम से हो जाएगा. So what is void? So हम दूसरे languages में देखते हैं void returns nothing. Void function just did like print, जैसे हमने पहले एक function बनाया था. Like वो सिर्फ हमें print करके दे रहा था. That was a void function. It was nothing returning to us, right? Like yeah, blank. But so Kotlin also have the void function, but is called as a unit function. So how do just हम उसे बताएंगे कैसे कंपाइलर को it is a void or a unit function. So like हम जैसे डेटा टाइप बताते थे वैसे ही हम यूनिट को बता देंगे. तो वी राइट ऑन द प्लेस ऑफ डेटा टाइप जो हम करते थे सेमीकोलन यूनिट. सो अब कंपाइलर समझ जाएगा कि इट इज अ यूनिट फंक्शन और इट्स अ void function. It will return nothing. It just has a block of code, right? In this example, if you see, it is a block of code. It doesn't returning anything. But for the other return types, if we are returning something, it will look like this. Like we are using the string and we're returning something. So that's the difference between the void function and the return, right? Yeah. Okay. Next. Okay. The great confusion. We are on it right now. Okay. Okay. So actually, if it's a great confusion, so let's create it. Okay, I'm sorry, create it. Let's decode it. So what are parameters and what are arguments? Okay. So when we make a function, fun or the if we see the syntax, fun name and within the parentheses we are giving parameters. So parameters in nothing but the values or the defining we give when we define a function actually. When we define a function, we provide the parameters. And when we call the function in the main part, and in the when we call the function in the main part, then give the value to that parameter. The value to that parameter is actually called the arguments. So अगर उसे मैं अच्छे से बताऊं, like अगर मैं कुछ थोड़ा स्क्रीन ऑफ करना, या ओके. तो पहला तो ये अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे, किस किस को वैसे कंफ्यूजन है इधर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में? क्योंकि मुझे तो था बहुत है. लाइक मुझे रिसेंट संदेश मुझे भी है. प्लीज see क्लेरिफाई. the lead is also having this man. Lead is also having this. Okay. 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 Yeah. So I'll try my best, man. I will try my best.
Okay. Okay, so we are in our playground. Okay, so we have a Mera function. So what we want to do, we have to learn about parameters and arguments. So let me just clear this. What I want कि मैं name चाहता हूँ. If I want the name from the user, right? So I'm giving a parameter right now. So name I want it. So now we have to tell the data. We have to tell the data type too. So it's a name, so it should be string. So हमने उसका name बता दिया कि it's a string data type, right? तो अब हमने name बता दिया. तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो मेरा फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर है name का. So इधर हम यूज करने वाले हैं string interpolation. अब जितना भी हमने पीछे पढ़ा string interpolation क्या होता है, वो वेरिएबल का उठाता है वैल्यू, तो हम वही करेंगे. सो हम प्रीवियस नॉलेज ही लगा रहे हैं, कुछ न्यू नहीं. सो अब मैं इधर लिखूंगा my name is, I will telling my name. So I'm telling my name right now. So my name is dollar name. So what dollar giving us? So dollar actually fetching the value of the name we are giving in the parameter, right? So अभी सबको पैरामीटर तो समझ में आ गया, right? अरे संदेश सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया. बहुत बढ़िया. तो पैरामीटर अगर समझ में आ गया, आर्गुमेंट उससे भी ज्यादा इजी है, उससे भी ज्यादा. सो मैंने जैसे बताया कि वो वैल्यू, बस उस पैरामीटर को तुम्हें वैल्यू देनी है. तुम्हें उसको कैसे वैल्यू दोगे, राइट? अब इफ आई वांट टू गिव इट अ वैल्यू, लेट मी जस्ट क्लियर इट. सो मेरा आई वांट टू गिव इट अ वैल्यू. अब मैंने जैसे बोला था मुझे उस पैरामीटर को वैल्यू देना है. So there are two types. We can give it the name or the value like two types. So we can use the named argument, or you can simply give the value. So we'll start with simply giving the value to the parameter. So my name is actually Sandesh. Okay, let us. संदेश टू, लाइक आई एम इंटरप्टिंग. अगर मेरा फंक्शन की जगह इनका फंक्शन कैसे रहेगा? Okay, bro. It's their function now. Okay, man. It's inka function now. It's inka. Okay, it's DTC ka function. That's better. एग्जैक्टली. DTC ka function. Should not actually calling it, but okay. It's DTC का function. So DTC का function वो name ले रहा है as a parameter और I am giving the value of Sandesh. So अब वो बोला a return expression required in a function with a block body. अब वो क्यों दे रहा है? Because मैंने इधर उसको return data type दे रखा है, but I am not actually giving the return. So ये error है मेरा. Just clear it. Okay, save the time. Arman, compiler take times, yeah? Okay, it's printing. My net issue. So it print like my name is Sandesh. So we'll be thinking like उसको संदेश मिला कहाँ से? थोड़ा हिंदी वाला भी हो गया, कोई नहीं. तो उसे संदेश मिला कहाँ से? सो जैसा मैंने बताया, मैंने उसे उससे नेम मांगा पैरामीटर में उस फंक्शन के, और मैंने यहाँ पर उससे इंटरपोलेट भी किया. मुझे नेम चाहिए यहाँ पर. अब वो ऊपर मेन में गया जहाँ पे मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. अब डीटीसी में मेरा संदेश आया, एक मेरा नाम आया उधर. तब वो देखेगा कि अच्छा अब तो एक ही है उधर, लाइक एक ही मुझे स्ट्रिंग मांग रहा है, तो लेट जस्ट असाइन द नेम संदेश. So it assigned the name variable, the value I gave it in the main function, right? So अब argument तुम्हें पता चल गया, and you also समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या होता है. पैरामीटर इज नथिंग बट जो हम फंक्शन जब डिफाइन कर रहे होते हैं फंक्शन, हम तब देते हैं. एंड व्हाट इज arguments? It's just the values to those parameters when we call it, right? So I said कि दो होते हैं, like दो टाइप से हम दे सकते हैं. एक होता है ये वाला टाइप, क्या आई गेव इट लाइक माइन, मैंने ऐसे वैल्यू दे दी संदेश. कोई ऐसा कि वो नेम को नेम करना चाहता है, तो दैट्स कॉल्ड अ नेम्ड आर्गुमेंट. सो आई वांट टू गिव नेम इक्वल्स टू संदेश. Let's see what it prints. Yeah, it's printing the same. How it's printing the same? उसने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको नेम कर दिया.
लाइक मैंने उसको सेम नेम दिया। अब ये ध्यान रखना आपको सेम नेम देना है, अगर आप गलत नेम दोगे तो उसको नहीं पता चलेगा। लाइक अभी आपने उसे असाइन कर रखा, आई असाइन नेम इक्वल्स टू संदेश, तो नीचे गया या इट सॉ या देयर इज अ वन मोर वेरिएबल लाइक नेम, सो उधर उसने देखा नेम नेम, सो बेसिकली द compiler understands and it printed the same name. Everyone understood what I just said, right? Parameters and arguments सबको आ गया. I just covered the named argument section in पूरा है सर। the half the lead है. Okay, okay. अपने अटेंडीज भी पूरे अच्छे से सीख चुके होंगे अभी तक। आराम से गाइस चैट easy पे लिख topic. के बता दो आउट ऑफ 5 कैसे थे आपके फैसिलिटेटर साहब। सबको ऐसा हो रहा होगा कि लाइक है थोड़ा ज्यादा हो गया। पैरामीटर्स बहुत आसान है, आ गया है, सबको समझ में आ ही गया। लाइक इधर 17 और 17 राइट, सबको आ ही गया होगा समझ में व्हाट आर पैरामीटर्स एंड व्हाट आर आर्गुमेंट्स, राइट? So Mehfooz, we can go on. I just covered like 2 or 3 slides like this. No, wait, Bezos. If you can wait, I just want to. Okay, you can go on further. Okay, so I just cleared that thing also. ये arguments बता रहा है same. Okay, so function with a multiple parameter. तो अभी जो मैंने बताया उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर्स मांग रहा था, which is the name, right? तो अगर अब मुझे क्या पता, मुझे नेम के साथ आपकी एज भी चाहिए हो, आपका एड्रेस भी चाहिए, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी। सो हाउ विल आई टेक इट? सो मुझे आपका नेम भी चाहिए, मुझे आपकी एज भी चाहिए, मुझे आपका एड्रेस भी चाहिए। सो नेम इज अ स्ट्रिंग, एज इज अ इंटीजर एंड एड्रेस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। सो नेम मेरा स्ट्रिंग है। सो जैसा मैंने पहले डिफाइन किया था फंक्शन कॉल में, फंक्शन जब मैं डिफाइन कर रहा था, नेम सेमीकोलन स्ट्रिंग कॉमा एज सेमीकोलन इंट, एंड अगर मुझे एड्रेस भी चाहिए होगा जस्ट डू अनदर कॉमा एड्रेस सेमीकोलन इंट, वो सॉरी स्ट्रिंग, राइट? सो यू जस्ट पुट लाइक 3 पैरामीटर्स और तुम कितने भी रख सकते हो जितना तुम्हारा मन है, इट्स नॉट कि तुम्हारे पास लिमिट है, राइट? अब तुम बोलोगे कि अब मुझे इसको कॉल भी करना है, राइट? अब मुझे इसको कॉल करना है, हाउ विल आई कॉल इट? सो मेन फंक्शन में जाओगे, एक बार चेक करना, महफूज नेक्स्ट स्लाइड, इफ देयर इज एन एग्जांपल देयर, नो, कम बैक टू दिस। हाँ, सो अगर तुम्हें कॉल करना है मेन फंक्शन को, सो हाउ विल यू कॉल दैट? यू जस्ट गिवन लाइक 3 पैरामीटर्स, अभी हम एक पैरामीटर ही कॉल कर रहे थे, एक कोई वैल्यू देके, हाउ विल आई गिव द 3 वैल्यूज? इट्स नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग। उधर ही जाओ मेन में, जैसे मैंने अपना नाम लिखा था संदेश, सेमीकोलन में संदेश, कॉमा अगला क्या है, अगला इट्स आस्किंग एज, तो आप एज लिख दो 18 या 19, कॉमा एड्रेस, पूरा अपना दोबारा अपना कोट्स में एज लिख दो, एड्रेस लिख दो, डन। तुमने अपने पैरामीटर्स को सारी वैल्यू दे दी जो जो उसको वैल्यू चाहिए थी। सो यू जस्ट डिड लाइक फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स। लाइक तुम्हें पैरामीटर्स तो मतलब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा अब तक, राइट? अरमान तुम्हारा तो बैठ ही गया होगा, सबके यस सर अटेंडेंस के साथ बैठ ही एकदम। गया, राइट? इतना पैरामीटर्स के बारे में आर्ग्यूमेंट्स बहुत आसान, राइट? नेक्स्ट में जाओगे अमन? ओ सो नेम्ड आर्गुमेंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इफ यू नेम, अगर तुम फंक्शन कॉल में नेम करके डाल दोगे, लाइक पहले ही तुम नेम कर दो, लाइक नेम इक्वल्स टू रेक्स एंड एज इक्वल्स टू 2 एंड एड्रेस इक्वल्स टू समथिंग, तुमने कॉल में ही उसे बता दिया कि कहाँ ये क्या, तुमने वेरिएबल असाइन ही कर दिया, राइट? तो दैट्स नेम्ड आर्गुमेंट होगी। नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पर थोड़ा समझाने वाला पार्ट है कैसे। अब तुम नीचे देखोगे रीअरेंज द आर्गुमेंट लिस्ट को देखो सिर्फ, सो उसमें एज पहले है और नेम बाद में। बोलोगे ऑर्डर चेंज कर दिया, तो मतलब तुम्हारा नेम की जगह 2 आएगा और तुम्हारा नेम की जगह तुम्हारा रेक्स आएगा, लोग सब कुछ उल्टा हो जाएगा, राइट? तुम कितने सोच रहे हो ऐसा होगा? कितने लोग सोच रहे हो सर? मैं चैट देख रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ आर थिंकिंग लाइक कि ये उल्टा हो जाएगा?
या फिर वो सेम ही रहेगा लाइक आउटपुट के बाद भी सेम? ओके, सेम, ओके, नाइस नाइस, सेम। तो जितना भी तीन लोगों ने सेम बोला, करेक्ट आंसर 4, करेक्ट आंसर सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है, इफ यू इवन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नेम्ड आर्गुमेंट, तुम अगर नेम्ड आर्गुमेंट बना रहे हो, इफ यू इवन चेंज द ऑर्डर, उससे कुछ चेंज होगा। यू जस्ट असाइन द, तुमने अभी नेम इक्वल्स टू रेक्स रखा है, तो अगर तुम उसे ऑर्डर चेंज भी कर दोगे तो कंपाइलर को यही लगेगा नेम इक्वल्स टू रेक्स ही है, नेम इक्वल्स टू 2 थोड़ा ना हो जाएगा। सो ऑर्डर चेंज करने में भी तुम्हारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा जो भी कोड होगा या फिर जो भी तुम प्रिंट कर रहे हो वो सेम ही रहेगा। राइट, आ गया समझ? नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ओके, सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर नथिंग लाइक लिटिल नथिंग। सो जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं, अगर हम उन्हें तभी उस वेरिएबल को हम तभी डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा? लाइक इन दिस एग्जांपल, बर्थडे ग्रीटिंग नेम डॉट डॉट नेम सेमीकोलन स्ट्रिंग इक्वल्स टू रोवर, हमने उसे पहले ही बता दिया कि स्ट्रिंग इक्वल्स टू रोवर है, मतलब नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, लाइक वी फर्स्ट हैंड डिक्लेयर्ड द नेम एंड एज हमने ऐसे बता दिया, और फिर नीचे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर दीज ओनली, कि हम उसको पहले ही डिक्लेयर कर दें वेरिएबल को और उसकी वैल्यू को भी। और हम ऐसा एज के साथ भी कर सकते थे, एज इंट इक्वल्स टू लाइक 1780। सो वो होते हैं आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं क्योंकि तुमने आंसर उसको पहले ही दे दिया, सो फंक्शन को ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सीधा डिफॉल्ट ही मिल जाएगा। अब कोई बोलेगा कि डिफॉल्ट कैन बी चेंज, ऐसा नहीं है, डिफॉल्ट को आप चेंज कर सकते हो, आप कॉल में जाओ चेंज कर दो, चेंज हो जाएगी आपकी वैल्यू, सिंपल। नेक्स्ट, ओके ओके, सो आई गेस मैंने यूनिट 1 मोस्टली बेसिक कॉटलिन कवर कर लिया है। सो कितनों को आ गया समझ? कितनों को आ गया? लाइक बेसिक कॉटलिन तुम्हें समझ में आ गया, यूनिट 1 में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली? कितनों को आ गया लाइक बेसिक कॉटलिन? और यूनिट 1 तो फोड़ दोगे, लाइक कोई डाउट ही नहीं आना, ऐसा वाली चीज। कितनों के साथ है? सत्यम को डाउट नहीं आएगा, यशस्वी को डाउट नहीं आएगा, जय को नहीं आएगा, साक्षी को नहीं आएगा, दृष्टि को भी नहीं आएगा। संदेश, हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट लर्नर, हमें 2 दिन तो 3 दिन यार लगा ये सीखने में। ब्रो, आई गेस जय जय ने मेरा एरर निकाल दिया, मतलब ऐसा नहीं हाँ, बोला नहीं आता, उसने एरर, मतलब काफी बढ़िया है, तो ये भी बहुत सही है। ओके, सो आई गेस सब कर लेंगे, यूनिट 1 तो लाइक फोड़ दोगे, और जब एप्स तुम्हारे बनेंगे तो जरूर पोस्ट करना और टैग करना, लाइक जीडीएस से डीटीसी को पक्का टैग करना, तो हम देखेंगे। और ऐसा नहीं कि तुम सेम सेम बनो, मतलब यूनिट 1 में ऑब्वियसली इट्स अ यूनिट, सो सेम सेम एप्स होंगे, तुम अपनी क्रिएटिविटी भी ला सकते हो, लाइक थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर दो, इमेज चेंज कर दो, कुछ भी। सो अब देखते तुम एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कैसे करोगे। सो मोस्टली जितने भी एंड्रॉइड डेवलपर्स होते हैं, सो इन द डे टू डे लाइफ दे यूज एंड्रॉइड स्टूडियो ओनली, बिकॉज एंड्रॉइड स्टूडियो इज अ प्रोफेशनल टूल। सो ये इंडस्ट्री लेवल वाला है, तो ऐसा नहीं होगा कि इफ यू आर गोइंग समवेयर कि आई यूज दिस तो तुम्हें मना कर देगा, यू आर यूजिंग ऑलरेडी, लाइक तुम अभी से ही अगर प्रोफेशनल करोगे, इसी को मास्टर करोगे, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, हाँ तो आई गेस सब विंडोज ही होगा सबके पास, तो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस। और किसी बार लिनक्स है तो लिनक्स का डिपेंड कर सकता है, बट इट इज फॉर विंडोज ओनली राइट नाउ। सो दिस इज द विंडोज स्पेसिफिकेशंस, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लाइक कि अगर वो देखें कि उनके पीसी में चलेगा या नहीं चलेगा, आई गेस सब में चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत देगा नहीं, क्योंकि डिस्क स्पेस भी सबके पास सही होगा, चल जाएगा। नेक्स्ट, ओके, सो लेट्स कम टू द मेन थिंग, लाइक कि हम इस कंपोज कैम्प, जो इसका नाम है कंपोज कैम्प, हम कंपोज विच इज अ जेट पैक कंपोज, वो है क्या? सो जेट पैक कंपोज अभी गूगल का आईओ 2019 आई गेस, हाँ 2019 में उन्होंने रिलीज किया जेट पैक कंपोज। सो इट, हम उन्होंने एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए बहुत रिलीफ किया है। कैसे? बेसिकली जेटपैक कंपोज में अभी जितना भी हमने फंक्शंस पढ़ा, वी यूज दोस फंक्शन अंडर अ कंपोजेबल, so we use composable functions
सो जिससे क्या होता है हमारा यूआई बहुत कम कोड में बन जाता है. लाइक कॉटलिन में भी कम में बनता था बट इट यूजेस लाइक मोर स्पेस एंड मेमोरी. बट जेटपैक कंपोज से वो और रिड्यूस हो गया. सो कैसे लाइक क्या क्या इसके हमारे पास प्रोस हैं. सो प्रोस जो हमारे हैं इट इज द यूजिबिलिटी ऑफ कोड. जैसा बताया फंक्शन, वी आर यूजिंग फंक्शन, सो वी कैन यूज फंक्शन एनी टाइम. we can use function in that file also, in that file also. तो function आप कभी भी यूज कर सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. राइट. सेकेंड इज द बॉयलर प्लेट. सो जब हम कोड लिख रहे होते हैं, जब बहुत सारा कोड लिख लेते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा लिख लिया फिर उसको अगेन हम लिखेंगे. तो जेट पैक में ऐसा नहीं है. हमें बहुत कम कोड लिखना होता है, यूआई हमारा एकदम अच्छा बनता है. लाइक कॉटलिन जैसा बनेगा बल्कि उससे ज्यादा अच्छा बनेगा आपका यूआई. तो लेस बॉयलर प्लेट कोड. थर्ड इज फास्टर व्यू चेंजेस. सो अभी जितना भी कॉटलिन में होता है, जैसे इफ वी मेक अर ऐप, वी हैव टू सी कि एमुलेटर पे वो कैसा बन रहा है. बट हमें जेटपैक कंपोज में एमुलेटर खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती. राइट, हमें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती. देयर इज अ फंक्शन लाइक प्रीव्यू. वी कैन प्रीव्यू द चेंजेस और वो लाइक रियल टाइम में तुम्हारे प्रीव्यू, लाइक इफ आई एम राइटिंग संदेश एंड देन कटिंग, सो उसी वक्त ही कट हो जाएगा और उसी वक्त ही बन जाएगा. लाइक बहुत फास्ट व्यू चेंजेस होते हैं हमारे. तो जेटपैक कंपोज के बहुत फायदे हैं विच विल बी लर्निंग इन दिस 1 month ड्यूरेशन. या नेक्स्ट, obviously, congratulations on successfully completing the unit 1. There are more unit coming, but unit 1 like basic fundamental clear karoge to sahi rahega. So unit 1 mein there will be 3 batches. Like first will be the Kotlin basics, another will be the Android Studio basics, third will be the birthday card. So you will making a birthday card or a birthday app. So जब बना लोगे तो अपने सोशल हैंडल्स पे डालना, लिंक्डइन, इंस्टा, और हमें टैग करना. हम सबको लाइक सबका ध्यान रखेंगे और सबके रिपोस्ट करेंगे. सो ये 3 बैचेस हैं और इन 3 बैचेस को फ्लॉन्ट करना, लाइक हर जगह डालना, डेवलपर प्रोफाइल में डालना, अपने लिंक्डइन पे डालना, आई गॉट दिस बैच टुडे, थैंक्स. तो सब करना, ऐसा कुछ नहीं. संदेश, सॉरी टू इंटरप्ट, आई गेस तुम थोड़ा इन्हें ये दिखा दो कि डेवलपर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, बिकॉज ओके मोस्ट ओके ऑफ देम ओके, श्योर माइट श्योर. इफ आई कैन शेयर not दिस. know. Yeah, sure, sure, sure. ओके And we'll provide the link too. ओके ओके, या श्योर. Guys, give me just 2 minutes. Okay. Yes. So for the developer profile, just go to this link. Okay, I'm just providing the link. Okay, I'm just putting in the chat box. You can just make it right now. It's really small, like it hardly takes like 5 minutes only. So go to this link and make your developer profile. So I'll just, I already have made it up. Like I already have it. So it will look like it will the page will look like this when we just make it. So it will be a dashboard and a profile in your saved pages. So this will be the profile. When you just go to into a page, because if अगर तुमने पहले नहीं बनाई होगी तो तुम्हारी दिख जाएगा, if you बता prompt आ जाएगा that you have to make a developer profile. So when we have तुम्हें badges मिलेंगे जब तुम बना लोगे. You get badges after completing every session. Like unit 1 के 3 batches हैं, so you will get 3 badges. So right now I have this much badges. So when you just तुम्हारे badges आ सकते हैं, just you can just go to and just go to add to favorites. तो यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हारी प्रोफाइल के एकदम सामने दिखेगा. और लाइक डेवलपर प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट, लाइक गूगल में मांगते हैं. आई गेव इट समवेयर, आई गेव इट इन जीसॉफ्ट, तो मांगते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक योर डेवलपर प्रोफाइल, बिकॉज तुम डेवलपर्स हो. अगर तुम्हें ऐप डेवलपर बनना है, जो कि इधर सबको ही बनना होगा इफ दे आर कमिंग आउट और दे जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस. So make a developer profile is not just for app dev, for everything. Like अगर तुम GDSC के भी कोई से भी events में जाते हो, like Flutter, बहुत सारे, so you can just start. तुम flaunt कर, like I have 18 badges, so let's see.
You can give to links like your GitHub, your LinkedIn, Twitter, everything. So it's like a portfolio. It's like a Google portfolio of yourself of what you did in your recent years. Right, Aman, I guess I cleared it. Yeah, yes. And yeah, Yes, sir. and I'll provide the profile link in the GDSC-DTC WhatsApp group also, so there will be no worries if someone left out. Yeah, and really, thank you for attending my session. And 18 people, and I'm really thanked that you guys are here. And see you guys for the unit 2. I'll be there. I will teach you the unit 2 also. And don't forget to just give me the pictures or the screenshot of your pages, like of the app you build in the unit 1. I'll be eager to watch every app, like every app. Yeah, and this even will featured in our official handles. Yeah, yeah, we'll feature in our official handle like every one of the screenshot you share. So just don't forget to share our sessions. And You guys. fill the feedback form for your facilitator, sir. How did he like teach you guys? And I it will be tried my glad. best, man. I tried my best. And we'll be back with again with unit 2, Yeah. your data science वाले सर जो आपको अभी एंड्रॉइड स्टडी पढ़ा रहे हैं. So till then, peace, everyone. So I was thinking we can take a picture or something, like a group Yeah. picture. Can you just Uh, can you just off the no, screen? I guess If any, how many of you can on your cameras? We want to just post in our handles, like it's our first no. session. I guess Sandesh, we can't give them access actually because of the Oh, platform. We are we sorry can't for give that. the we can't give the video, right? Can we Yeah. give the? I guess we can. No worries, no worries, Sandesh. We are coming up offline very soon. ऑफलाइन में तो फोटोज लेना है सबके साथ. So So let's I see. guess तब तो selfies ही चलेंगे और Yeah, even hashtags. sure. Okay, Sandesh. So I guess we are done for the day, and thank you guys, and thank you, Sandesh. Yeah, thanks. Thanks. It was a Thanks great so time. much.